friends, okay, today our topic is pharmacokinetics. So, pharmacokinetics is made up of two words, that is pharmaco and kinetics. Pharmaco means drug and kinetics means movement, motion. So, if we combine these two words, then we get the movement of the drug. So, pharmacokinetics is actually the movement of drug through our body. हमारी बॉडी में ड्रग जाएगी और उसके बाद हमारी बॉडी को चेंजेस लाएगी ड्रग में एंड देन द ड्रग विल शो इट्स सिस्टमिक इफेक्ट्स इन द बॉडी. सो the movement of drug through our body, or we can also say that what our body does to the drug. हमारी बॉडी हमारी ड्रग में क्या क्या चेंजेस लाएगी before getting or before showing its systemic effects in the body. That will study under pharmacokinetics. So pharmacokinetics actually includes the absorption, the distribution, metabolism and excretion of the drug. Okay, so all these four processes, that is absorption of the drug, distribution of the drug, metabolism of the drug and excretion of the drug, these are included under pharmacokinetics and we'll study each one of them. So before going into detail into absorption, distribution, etc., these processes, we have to understood that how the drug actually crosses the cell membrane of a cell. हमारी body जो है cell से बनी हुई है obviously, and then the cell has its own cell membrane and which is not easy to cross. So there are various processes through which a drug can cross the cell membrane. And if we talk about the cell membrane, as you must be familiar with the cell membrane, that cell membrane is made up of a lipid bilayer. हमारी जो cell membrane है, it is made up of a lipid bilayer. ठीक है ना, phospholipid से बनी हुई है हमारी cell membrane of the cell within our body. And phospholipids का जो part है, एक part है उसमें वो hydrophobic और we can say lipophilic. Actually lipophilic होता है and lipophilic means that is lipid loving molecule. ठीक है, तो हमारी cell membrane जो है lipid loving है. That is, इसका मतलब अगर हम डिटेल में समझते हैं तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएंगे बिकॉज दीज आर लिपिड सॉल्युबल. एंड हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर एंड इट हैज़ अ पार्ट दैट इज़ नोन एज लाइपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक. लाइपोफिलिक फैट और लिपिड लविंग, हाइड्रोफोबिक दैट इज़ वाटर रिपेलिंग. वाटर को नहीं पसंद करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, वेयर एज किसे लाइक करती है, इट लव्स लिपिड्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स. सो लिपिड लविंग मॉलिक्यूल्स हमारी सेल मेम्ब्रेन में इजीली क्रॉस हो जाएंगे, वेयर एज वाटर लविंग और अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल नीड एन डिफरेंट मेथड. And if we talk about the methods that how the drug is gonna cross the cell membrane, so we have passive diffusion, active transport, facilitated diffusion and endocytosis. So these four methods we have that helps the drug to pass through the cell membrane and enter the cell. So number one is passive diffusion. पैसिव डिफ्यूजन में हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल प्रोटीन और एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. इट विल ईजिली गेट डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन by passive diffusion and enter the cell. It does not require any energy. और एग्जाम्पल इसका मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है. पैसिव डिफ्यूजन से कौन सी टाइप्स ऑफ ड्रग्स पास हो जाएंगी, ऑब्वियसली विच आर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स. ओके, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर और जो उसी नेचर की होंगी, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी. These will cross the cell membrane easily and enter the cell. Next we have the active transport. Active transport, नाम से समझ में आ रहा है, the molecules or the drug will require energy to move across the cell membrane of the cell. So in this we need energy and energy is obtained by hydrolysis of ATP. That is ATP जो हमारी टूटती है ADP में, and then the energy is derived and by this energy our drug moves across the cell membrane. So active transport के example हमारा आ जाएगा absorption of levodopa drug from the intestine.
नेक्स्ट वी हैव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है ना। कैरियर प्रोटीन को बाइंड कर कर हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल उस से अटैच होकर कैरियर प्रोटीन से देन इट विल पास द और क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है ना। इसका एग्जांपल जो है हमारा फिजियोलॉजिकल भी हम दे सकते हैं। इसका एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में अगर आपको पता ही है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म इंसुलिन में जो पढ़ाया जाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट दैट इज़ GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, that is a carrier protein and glucose binds with the GLUT4 and then with the help of or with the attachment of GLUT4 glucose is entered into the cell. So transport of glucose across the cell membrane, it can be example of facilitated diffusion. Okay, last we have the endocytosis, ठीक है ना। endocytosis is engulfment by the cell membrane, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन जो है लार्ज मॉलिक्यूलर ड्रग्स जो होती हैं, लार्ज साइज ड्रग्स, बाय एनगल्फिंग द ड्रग इज एंटर्ड इनटू द cell. Large sized drug are taken into the cell or crosses the cell membrane via endocytosis. Okay. और एंडोसाइटोसिस का हम एग्जांपल अगर देखते हैं तो दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, the molecule is taken up by the cell through vesicle formation by the cell membrane and then engulfment by the cell membrane and finally it enters the cell through endocytosis. So these were the few processes or mechanisms, we can say: passive diffusion, active transport, facilitated diffusion, endocytosis, through which all the drugs can move through the biological membrane, that is the cell membrane, which is made up of a lipid bilayer and which is lipophilic, that is lipid loving molecules. Okay, so now moving to the drug absorption process. Drug absorption, that is movement of the drug in the body and getting absorbed in the bloodstream. Okay, it move, हमारी जो ड्रग है हमारी बॉडी में ओरली इंजेस्ट कराई जा रही हैं या फिर और वाया एंट्रल रूट और पैरेंट्रल रूट, ठीक है ना। सो इट विल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, cell membranes, as we have already discussed just now, and then it will enter into the bloodstream, and this process is known as the drug absorption. Movement of drug across the cell membranes and it will be get absorbed in the bloodstream. This is known as the drug absorption. Okay, then drug absorption, there are certain factors जो हमारी ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करेंगे. सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर सर्टेन हमारी बॉडी के भी क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को. सो हम ये फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहला फैक्टर है वही लिपिड सॉल्युबल ड्रग. लिपिड सॉल्युबल ड्रग ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी हमारी बॉडी में. वही सेम रीज़न है विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट बिकॉज आवर cell membrane is made up of a lipid bilayer, ठीक है ना. so lipid soluble drugs will be better absorbed, and whereas water soluble drugs will not be better absorbed as compared to the lipid soluble drugs. so lipid soluble drugs हमारी बॉडी में ज़्यादा बेहतर तरीके से absorb होती हैं than water soluble drugs. Next factor we have an important factor, it is pH and ionization. so pH जो है it also affects the drug absorption, ठीक है ना. अगर हम बात करते हैं मोस्टली ड्रग्स जो है हमारी वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या तो और वीक ऑर्गेनिक बेसिस हैं. एग्जाम्पल भी अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इनका, सो दैट आपको ईजीली फार्माकोलॉजी में थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स याद करके इजीली ड्रग के नाम याद हो ही जाएंगे इवेंचुअली. मोस्ट ड्रग्स आर ईदर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसिस. एन एग्जाम्पल ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड कैन बी एस्पिरिन एंड वीक ऑर्गेनिक बेसिस कैन बी कोडीन. ओके, सो वीक ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें, ये ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं हमारे अक्रॉस द स्टमक. अक्रॉस द स्टमक हमारे वीक ऑर्गेनिक एसिड्स ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एसिडिक कंडीशंस ऑफ द स्टमक, एंड वेयर एज वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पोअरली एब्जॉर्ब होंगे अक्रॉस द इंटेस्टाइन्स. एंड वीक ऑर्गेनिक बेसिस these will be better absorbed across the intestine because of low acidity and increase in the pH.
ठीक है ना। तो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे अक्रॉस द स्टमक, वेयर एज वीक ऑर्गेनिक बेसिस हमारे ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे अक्रॉस द इंटेस्टाइन्स। ये रही हमारी पीएच और आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अदर फैक्टर जो हो इंक्लूडेड हैं इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन, दीज कैन बी द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, कुछ ड्रग्स जो है हमारी जीआईटी में डीजनरेटेड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हम ओरली नहीं दे पाएंगे बिकॉज इट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड डाइजेस्टेड बाय द HCl प्रेजेंट इन द स्टमक। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम इंसुलिन को वाया इंजेक्शंस देते हैं इंट्रावेनसली। एंड अनदर फैक्टर इन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी दैट इंट्रावेनस रूट जो है हमारी ड्रग एब्जॉर्प्शन को बाईपास कर देता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन में इंक्लूडेड नहीं होता बिकॉज इट डायरेक्टली एंटर्स द सर्कुलेशन। ठीक है ना। ड्रग एब्जॉर्ब कराने के लिए वी हैव टू गिव द ड्रग orally or by the enteral route. Okay, and next factor we have the area of absorbing surface. Drugs are better absorbed in small intestine क्योंकि वहाँ पर large surface area है हमारा, whereas low absorption or rate of absorption will be slower in the stomach because of the lesser surface area as compared to the intestines. So next factor we have dosage, and it is verily understood that अगर आप high concentration of dose दे रहे हैं faster rate of diffusion होगा, whereas lower concentration of dosage if you are giving to the patient or the body, the drug will be absorbed or diffused at the slower rate. So this was about the factors of the drug absorption. Drug absorption, that is the movement of the drug from the site of administration of the drug into the bloodstream, and this process is known as the absorption. Before getting into detail about the drug distribution, we have one term that is bioavailability. Bioavailability is actually the amount of the drug getting absorbed in the bloodstream. ठीक है ना। हम blood नहीं, drug ले रहे हैं orally, so it will pass the stomach, then it will go to the intestines, then it will be get absorbed in the systemic circulation, and whereas a small amount will also go to the liver for metabolism. And so in this way the amount of the drug or the fraction of the drug that we take is not 100% absorbed in the bloodstream, and this is known as bioavailability. That is the fraction of the drug that actually reaches the blood circulation or the bloodstream or the systemic circulation, that is the bioavailability. And in the routes of drug administration we have studied the local route, then the systemic routes. So in the systemic routes we have the parenteral route, and in the parenteral route intravenous routes were included. ठीक है ना। when we give the drug intravenously, that is directly into the vein and direct in the blood circulation में हम drug दे रहे हैं। सो इंट्रावेनस जो मेथड है हमारा ड्रग देने का, दैट इज़ डायरेक्ट हम वीन में ब्लड दे रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर करा रहे हैं ड्रग को। ओनली दिस मेथड ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। समझ में आती है बात कि जितना अमाउंट हमने दिया है बॉडी को ड्रग का, उतना ही हमारा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। 100% ऑफ द ड्रग डजेंट रीच द ब्लड अनलेस इट इज़ इंट्रावेनस। ठीक है ना। Okay, so this was it guys. I hope it made sense. Until next time.